Teaching technology with one page, one lecture. A mathematical question is given in which we have to prove 1 by x plus 1 by z equal to 1 by y according to given figure. So first of all, we have to simplify this figure. So next slide, we can divide this figure in two parts. So triangle ARC is separated from the complete figure. Now that there are two triangles, triangle APC and triangle ARC, having a perpendicular line QB between them. Now we have to prove 1 by x plus 1 by z equal to 1 by y. For solving purpose, now we use these two triangles. Left hand side, in triangle APC, there are two triangles and both are similar. Likewise, in triangle ARC, there are two triangles and both are similar. And we know that for similar triangles, the ratio of sides are equal. So for triangle PAC, when equivalent to triangle QBC, we can say AC by x equal to BC by y. अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इक्वेशन है उसमें x, z और y डिनोमिनेटर में है, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही करेंगे कि x और y डिनोमिनेटर में आए, तो कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी रहेगा. तो AC बाई x इज इक्वल टू BC बाई y. ऐसे ही सेकेंड ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल में AC डिवाइड बाई z इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई y, तो इक्वेशन नंबर 2. अब बड़ा सिंपल सा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं. तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड में. तो जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ AC कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 बाई वाई कॉमन निकाल लेंगे, तो BC और AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी और फाइनल आंसर ही मिल जाएगा, है ना. तो सिंप्लीफाई किया है, तो AC कॉमन निकाल लिया, 1 बाई वाई कॉमन निकाल लिया, ये पार्ट AC के इक्वल है. तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो उस केस के अंदर फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई वाई. तो यूजिंग वन पेज वन लेक्चर we simplified this question. तो कॉन्सेप्ट मैथ्स टीचिंग भी इजी है, तो यू कैन यूज वन पेज वन लेक्चर. So we develop teaching, learning and revision software. So our website is onepageonelecture.in. You can WhatsApp at 93142 92470.